Good morning, students. Today we will learn something about the few activities which explain how winds are formed. In this activity, we will have to take a tin can. We will take off the lid. We will fill it half with water. We will place it over a burner or maybe a candle flame as shown in the figure. Heat it till it boils. Heat it till it boils. Put off the flame. Now quickly place the lid on the tin can. Pour cold water onto the tin can. What do you observe? Why does the tin can gets distorted? अब होता क्या है, अब अगर आप इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे तो वो टिन कैन डिस्टॉर्ट हो जाता है. रीज़न बिहाइंड दिस इज़ जो इसके अंदर वाटर वेपर था वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, यानी पानी में बदल जाता है. वाटर ड्रॉपलेट्स बना के फिर से पानी बना देता है और जैसे ही वाटर वेपर वापस से लिक्विड में बदल जाता है तो प्रेशर गिर जाता है और बाहर का प्रेशर तो वैसे ही बना रहता है. फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस टिन कैन के ऊपर पड़ता है जिसकी वजह से वो डिस्टॉर्ट हो जाता है. तो वाटर वेपर इन द टिन कैन गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. द प्रेशर इनसाइड ऑफ द कैन गेट्स रिड्यूस्ड. The atmospheric pressure outside is greater than the pressure inside of the tin can. So pressure is exerted on the tin can be distorting it. Now, there are high speed winds are accompanied by reduced air pressure. Crumple up a piece of paper into a ball smaller than the size of the mouth of a bottle. Now place a piece of ball near the mouth of the bottle as shown and blow into the bottle. What do you see? You will feel that the paper ball should move at the back, but it doesn't happen. Actually, what happens when we are blowing air into the bottle, it creates a reduced pressure, air pressure near the mouth than inside of the bottle. The air inside the bottle is at high pressure and near the neck is at low pressure. So the paper ball turns to come out. Now there is another activity to prove the same. Here we will take two balloons, fill it with little amount of water, tie it up, blow air into it and tie it up as shown in this figure. Tie it up on a stick. Now blow in the center. You will observe that the two balloons move towards each other. What can be the reason? This is because when we blow air in between the balloons, the air pressure is reduced. The air pressure outside the balloons would then push them towards each other. तो बीच में जब आप ब्लो करते हैं तो वहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है और उसके बैलून्स के बाहर की तरफ प्रेशर हाई रहता है, जिसकी वजह से वो दोनों बैलून्स को आप पास ले आता है. High speed winds are accompanied by reduced pressure. Again, there is another activity in which you will have to take a strip of paper which is 10 centimeters long and 3 centimeters wide. Hold it between your thumb and your forefinger as shown. Now blow over the piece of paper. उसके ऊपर से blow कर दो. आप क्या देखोगे कि वो piece of paper ऊपर जाएगा. This is because when we blow air over the piece of strip of paper, the pressure over here gets reduced and the pressure below the strip of paper is high, so it will push the paper upwards. Air expands on heating. Let us take a boiling tube. पहले एक boiling tube लिया. Stretch a balloon over it. Stretch a balloon over the neck of the tube. Keep it in a beaker containing hot water for say 2 or 3 minutes. What do you observe? Next, take this boiling tube out from the hot water. Let it cool to room temperature. Now place it in a beaker containing cold water. What do you observe? आप ये देखोगे कि फर्स्ट केस में बैलून जो रहता है वो इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है. रीज़न क्या है
कि फर्स्ट केस में जो एयर टेस्ट बॉइलिंग ट्यूब के अंदर है वो हीट अप हो जाती है एंड इट मूव्स अप. एज इट मूव्स अप इट इज गोइंग टू कॉज द बलून टू इन्फ्लेट. तो हॉट किसकी वजह से हो रहा था? ये बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जो एयर था वो हॉट किसकी वजह से हो रहा था? क्योंकि उसको गर्म पानी में रखा था. तो गर्म पानी वो जो एयर अंदर है दैट उसको गर्म करता है और वो जो एयर होती है वो हॉट और हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, एक्सपांड करती है और ऊपर उड़ जाती है, इसलिए बलून फूल जाता है. ऑन द अदर हैंड when the air was placed the boiling tube was placed inside of the cold water, the balloon deflates as the cold air sinks down. Now, another activity to prove that air expands on heating. Take 2 paper bags or paper cups. Tie them as shown over here in an inverted position. Now place a lighted candle below one of the paper cups or the paper bag. What do you observe? You will see that the paper bag over the candle flame is pushed upwards. Why is that? This is so because the air above the lightest candle becomes hot and it rises up. This pushes the paper bag up. तो आप ये सब एक्टिविटीज़ में ये देखते हैं कि हॉट एयर राइज अप करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है और आसपास जो हाई प्रेशर होता है वो वहाँ से एयर ब्लो करके लो प्रेशर की ओर आती है और इसकी वजह से विंड्स प्रोड्यूस होती है. थैंक यू.